Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video we are going to try graphic liners. Now we are not going to try any particular brand, but rather we are going to make it ourselves. So I have 3 recipes that I've looked around on the internet to make graphic liners, and we are going to test all those recipes, and uske baad we are also going to put those graphic liners on our eyes to see how they works. Right now they are all about the rage and they are pretty expensive to buy. Let's see if we can make it ourselves and they can work. Without further ado, let's get on to the video. So I bought 3 palettes that even if they get ruined, I won't be mad. First one is this MUA Makeup Academy. It has pretty shades. The other one is very old 7 Heaven palette. This one, let me show you, has a lot of shades. So I thought this is nice one to have. The third one is the Swiss Beauty one, but it's cheap, so it also had a lot of shades. So the 3 methods that I could find. First one, we are going to mix our eyeshadows with this toner. The second one is we are going to mix our eyeshadows with this aloe vera gel. Third one is we are going to mix our eyeshadows with this concealer. So we have 3 methods and we'll see which one is going to work. That is mixing our eyeshadows with toner. First I am going to take this purple shade. I really like this shade, so let's scrape this one. This is going to be enough, and now I'm going to take some toner, put a drop or 2 of, that's it, I think a drop is enough. Let's mix this one. This actually looks pretty. I'm going to take a bit more of this. This is how it looks. Okay guys, so this is how it looks, and now I'm going to put that on my eyelids. So let's see how it works. And honestly, I'm not even kidding, it looks good. It legit looks like a liner. I'm taking my wing eyeliner brush or liner brush, moment of truth. So you can see, let me just apply it with it once more over it. I was not expecting it to work. So let me just do both of my eyes and I'll show you. Red, मैंने एक और कलर बनाया था जो कि रेड कलर था, और यहाँ पे मैंने अपनी फुल आईलिड पे लगाया, बल्कि यहाँ पे एक नॉर्मल ग्राफिक लाइनर टाइप का लुक देने की मैंने कोशिश करी है. एंड इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे पता नहीं था कि मेरे लाइनर्स के लिए इतने बेकार हो गए ओवर द ईयर्स ऑफ नॉट यूजिंग अ लाइनर. तो आई डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन दिस. लाइक ये चिपक नहीं रहा है आँख पे एंड इट लुक्स गुड. द कलर्स लुक गुड. आई वुड से दिस वन डेफिनेटली वर्क्स, and I'm very excited and happy about this because this is one of the easiest way you can make it and it works perfect. So 2 thumbs up from me. Let's move on to some aloe vera. So guys, मैं यही पैलेट ले रही हूँ बिकॉज मुझे इसके कलर्स अच्छे लग रहे हैं, अच्छे से मिक्स भी हो रहे हैं. अब मैं ये ब्लू कलर है वो लेके कोशिश करती हूँ. स्टार्टिंग प्रोसेस तो अपनी वही है, स्क्रैप करने की. थोड़ा ज़्यादा इसलिए करेंगे ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकें. एलोवेरा जेल ले रही हूँ क्लियर. This is how it looks. हाथ पे लगा के एक बार आपको दिखाती हूँ. मैं ये वाले से भी बना रही हूँ. This time I'm taking this angled brush because my skills are super bad. We'll try this one out. Let me say, I don't have high hopes for this one. So guys, this is definitely there, but मुझे बार बार आगे पीछे करना पड़ा. इस वाले पे मैंने टील कलर लगाया है, इस वाले पे ब्लू कलर लगाया है, और लगा तो है बट इट वाज अ बिट हेक्टिक क्योंकि आपको बार बार आगे पीछे करना पड़ रहा था. फिर ज़्यादा स्मूथ नहीं था जैसे हमारा पहले वाला एप्लीकेशन था. जब एलोवेरा जेल थोड़ा सा हल्का सा ड्राई हो जाए तब लगाने में ज़्यादा बेटर फिनिश आएगी एज़ कम्पेयर टू जब ये गीला होता है. डेफिनेटली वर्क्स, बट इज़ इट बेटर देन द फर्स्ट वन? नो. I'll give this one a thumbs up. It definitely works. Now we are going to move on to the third and last one when I'm going to mix it with a concealer. So first I am going to take this concealer. This is a Freedom London concealer. I'm going to take this one. इसको लेने का मेन रीज़न ये है कि ये लाइट शेड है. जो भी हमारा आई शेडो होगा उस पर ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा. So that is the whole point. इसमें हम लेंगे पिंक कलर, तो हम यही कलर लेते हैं.
सो अब मैं ये पिंक कलर जो मैंने बनाया था, ये वाला, ये ट्राई करके देखती हूँ। काफ़ी ड्राई है, बट उसका रीज़न वही है कि आपने जो कंसीलर यूज़ करा है वो ड्राई होगा, जैसे मेरा कंसीलर ड्राई है। इट इज़ लुकिंग गुड, थोड़ा सा ड्राई है, इट इज़ लुकिंग नाइस। और जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ इसे, तो ये थोड़ी जो स्किन की वार्मथ है उसकी वजह से भी थोड़ा बेटर लग रहा है। सो दिस इज़ हाउ दिस वन लुक। आई रियली लाइक दिस वन टू। ऑनेस्टली आई एम नॉट मैड एट दिस वन। पेस्टल शेड्स आई थिंक, और मैट पेस्टल शेड्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो बेसिकली जो भी हमने तीनों रेसिपीज ट्राई करी हैं उनमें से तीनों ही वर्क करी, बट जो थर्ड रेसिपी थी, यानी कि व्हेन यू मिक्स आई शैडो पिगमेंट विद कंसीलर, पहली वाली जो की थी व्हेन यू मिक्स एन आई शैडो विद सम टोनर, दोनों ही बहुत ही अच्छी रेसिपीज थी। तो first and third definitely I'll recommend, they were nice. This concludes my video for today. I hope you liked the video, and if you do, please don't forget to give this video a big thumbs up and subscribe to my channel. As always, I will see you guys in my next video. Till then, bye.